Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about nursing care plan, that is obsessive compulsive disorder. This is very important nursing care plan from mental health nursing or psychiatric nursing, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के यहाँ पर देखेंगे, जिसको हम ओसीडी के नाम से जानते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज करेंगे, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, ये सारे स्टेप्स होंगे यहाँ पर। वीडियो में हम टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान यहाँ देखने वाले हैं। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, देन हम केयर प्लान्स को देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर features a pattern of unwanted thoughts and fears that lead to you repetitive behavior, compulsion. These obsession and compulsion interfere the daily activities and cause significant distress. Next, obsessive compulsive disorder is a mental disorder in which people have recurring unwanted thoughts, ideas, or sensation. Obsession to get rid of thoughts, they feel driven to do something repeatedly. Compulsions, the repetitive behavior such as hand washing, cleaning, checking or things, and mental act like counting or other activities can significantly interfere with a person's daily activities and social interactions. Here ये था यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान ऑन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, फर्स्ट यहाँ पर होगा एंजाइटी, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा। Patient says that I am very anxious due to my repeated behavior and recurrent thoughts. And objective data देखते हैं पर assess the patient's appearance on behavior, looking anxious and worried. After writing these data, we write here the nursing diagnosis. तो यहाँ पर nursing diagnosis होगा यहाँ पर anxiety as related to earlier life conflict secondary to obsessive compulsive disorder. गोल होगा यहाँ पर to reduce anxiety. प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। प्लानिंग और इंटरवेंशन में हम प्लान करेंगे पेशेंट को क्या क्या इंटरवेंशन हम दे सकते हैं। रेशनल इज़ द मीन्स व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो हम इंटरवेंशन दे रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान, मीन्स जो हमने इंटरवेंशन प्लान किया उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से देखते हैं। फर्स्ट इंटरवेंशन एस्टेब्लिश trusting relationship with the patient, relation होगा this provide support in intervention process, implementation होगा establish trusting relationship। number second, recognize actions without drawing attention to the patient, relation होगा ritualistic actions can be lessened by inattention, implementation होगा recognize action without drawing attention to the patient। number third, maintain a peaceful atmosphere and talk to the patient in a comfortable manner। Relation होगा the patient will feel less worried as a result of any effort to alleviate stress, which could lessen the severity of the compulsive activities। Implementation होगा maintain a peaceful atmosphere and talk to the patient in a comfortable manner। Number 4 देखते हैं help the client to make a schedule for daily
नेक्स्ट रेशनल होगा उसमें डेली रूटीन हेल्प टू रिड्यूस द टाइम स्पेंट ऑन अनवांटेड थॉट्स, इम्प्लीमेंट इसको हेल्प द क्लाइंट टू मेक ए शेड्यूल फॉर डेली। नंबर 5, advise the client in planning rest period between activities and rituals, रेशनल होगा हेल्प टू कंजर्व एनर्जी, इम्प्लीमेंटेशन होगा एडवाइज द क्लाइंट इन प्लानिंग रेस्ट पीरियड बिटवीन एक्टिविटीज एंड रिचुअल्स। नंबर 6 देखते हैं, गाइड द पेशेंट इन डेवलपिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, एग्जाम्पल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रेशनल होगा repetitive activities can be replaced with stress management approaches to change habitual practice, implementation होगा guidance given to patient in developing stress management techniques, example deep breathing exercise, relaxation techniques. Number 7, determine what the patient find relaxing, such as taking a warm bath such as taking a warm bath or listening to music. Participate in productive hobbies like calm attention requiring games and creative arts like painting, needlepoint, woodworking, and pottery. Rational होगा organize event, give the patient less time to engage in compulsive behavior and thoughts. Implementation देखते हैं इसमें, determine what the patient find relaxing, such as taking a warm bath or listening to music. Participated in productive hobbies. नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर, एडवाइज द पेशेंट टू एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन। रेशनल होगा एंजाइटी कैन बी रिड्यूस थ्रू एक्सरसाइज, इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है एडवाइज द पेशेंट टू एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन। नंबर 9, सपोर्ट नॉन कंपल्सिव बिहेवियर। रेशनल होगा एड इन गेनिंग कंट्रोल ओवर द ऑब्सेसिव कंपल्सिव सीक्वेंस, इम्प्लीमेंटेशन होगा पेशेंट सपोर्टेड फॉर द नॉन कंपल्सिव बिहेवियर। नंबर 10, एडमिनिस्टर एंटी एंजाइटी medications as prescribed, example fluoxetine and fluoxamine to decrease anxiety। रेशनल होगा इसमें टू डिक्रीज एंजाइटी सिम्टम्स, इम्प्लीमेंटेशन लिखना है एंजाइटी एंटी एंजाइटी मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड एज प्रेस्क्राइब्ड। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइटेड द एवेल्यूशन स्टेप्स। तो देखते हैं केयर प्लान नंबर फर्स्ट का एवेल्यूशन। तो यहाँ पर एवेल्यूशन लिखना है ना, एंजाइटी रिड्यूस्ड मीन्स जो हमारा गोल था टू रिड्यूस एंजाइटी वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का यहाँ की नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट हमने पूरा किया है। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड होगा यहाँ पर इनइफेक्टिव कोपिंग। इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट, subjective data, patient asking for help about ritualistic behavior, objective data, ritualistic activity, failure to respond adequately to responsibility, or next NGS. After writing these data we write it the nursing diagnosis। तो यहाँ पर nursing diagnosis होगा ineffective coping related to situational crisis secondary to obsessive compulsive disorder। गोल देखते हैं, the patient will show that they are able to stop obsessive thoughts and abstain from repetitive activities। इंटरवेंशन देखते हैं, फर्स्ट हम determine the circumstances that exacerbate symptoms and causes ritualistic behavior। रेशनल होगा to assist client in recognizing the precipitating elements। implementation होगा determine the circumstances that exacerbate symptoms and cause ritualistic behavior। number second, assess the patient with dependency needs as necessary। रेशनल होगा eliminating sources of dependency abruptly and completely would stress the client and add to their load। implementation होगा patient assisted with dependency needs as necessary। number third, encourage positive acknowledgement for self reliant action। रेशनल होगा self esteem is raised and desired behavior are encouraged to be repeated by constructive feedback। implementation होगा encourage positive acknowledgement to self reliant action। number 4 देखते हैं, allow plenty of time for rituals at the beginning of the treatment, avoid passing judgment or voicing any displeasure with the action। रेशनल होगा the level of anxiety that can be induced by denying the patient। implementation का allowed plenty of time for rituals at the beginning of the treatment। number
फिर देखते हैं प्रोवाइड ए प्लान स्ट्रक्चर शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज। रेशनल होगा स्ट्रक्चर शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज प्रोवाइड ए फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। इम्प्लीमेंटेशन होगा प्लान स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज provided. Number 6, encourage and support the patient's interest in understanding the significance and rationales behind the behavior. Rational होगा it is possible that the client is not aware of the link between emotional issues and obsessive habits. Implementation होगा encourage and support the patient interest. Number 7 देखते हैं यहाँ पर promote awareness of a series of events that lead to ritualistic or compulsive behavior. Rational होगा the first step in educating a client on how to stop worry from escalating is recognition of the precipitating circumstances. Implementation को promoted awareness of a series of events that lead to ritualistic or compulsive behavior. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 2 का जो evaluation है, तो ये evaluation में हमको लिखना है नाउ पेशेंट इज एबल टू स्टॉप ऑब्सेसिव थॉट्स एंड एब्सटेन फ्रॉम रिपीटेटिव एक्शंस। तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3। नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 हो गया यहाँ पर सेल्फ केयर डेफिसिट, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट will realize that I am having difficulty of doing my activities of daily living, and objective data here refusal to practice self hygiene, unclean clothes, uncombed hair, a bad body odor. After writing these interventions, we write here the nursing diagnosis. A nursing diagnosis is self care deficit related to excessive ritualistic habits secondary to obsessive compulsive disorder. Goal होगा the patient will be capable of taking care of their own activity of daily livings. नर्सिंग इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट एनकरेज क्लाइंट टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स एज पर एक्टिविटी लेवल। रेशन होगा सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज एनहेंस सेल्फ एस्टीम। इम्प्लीमेंटेशन हो गया पर एनकरेज क्लाइंट टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स। एवेल्यूशन होगा नो सॉरी ये हम बाद में देखेंगे। सेकंड नंबर देखते हैं discuss with the patient short term objectives regarding self care and plan on how to achieve them. Rational होगा assist the patient in creating achievable goals. Implementation होगा पर discuss with the patient short term objectives. Number 3, provide supervision for every task until the patient successfully demonstrate the skill. Rational होगा the patient capacity to carry out self care procedures may fluctuate frequently throughout time and will need to be monitored on the regular basis. Implementation होगा patient supervise. Number 4, encourage the client to complete activities of daily livings or ADLS activity of daily living to the best of their ability. Rational होगा self esteem is raised when autonomous tasks are completed successfully. Implementation होगा encourage the client to complete activity of daily living to the best of their ability. Number 5, encourage self reliance when a client is incapable to perform step in and help. Rational होगा nursing priorities include the client's security and comfort. Implementation होगा encourage self reliance. Number 6, maintain a regular schedule and give the patient enough time to finish the task. Rational होगा getting used to a routine makes it easier and less labor intensive. This aid in the aids the patient in planning and executing self-care techniques. Implementation को maintain a regular schedule and give the patient enough time to finish the task. Number 7 होगा recognize individual accomplishments and provide encouragement. Reason होगा self-esteem is raised and the desired behavior are encouraged to be repeated by positive reinforcement. Implementation होगा recognize individual accomplishment and provide encouragement. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 3 का evaluation। तो यहाँ evaluation होगा नाउ पेशेंट इज capable of taking care of their own activity of daily living। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4।
केयर प्लान नंबर 4 तो क्या फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, जिसमें देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड ऑब्जेक्टिव डाटा यर असेस द स्किन इंटीग्रिटी। नर्सिंग डायग्नोसिस में देखते हैं यहाँ पर risk for impaired skin integrity related to repeated cleansing behavior, hand washing. This is hand washing, HAND WASHANG। गोल हो गया यहाँ पर टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट देखते हैं, असेस द कंडीशन ऑफ द स्किन, रेशन होगा कंपल्सिव बिहेवियर सच एज हैंड वॉशिंग and repeated showering can damage the integrity of the skin. This implementation होगा skin assessed. Number second, encourage the use of mild soap, रेशन होगा help to reduce skin damage. Implementation होगा encourage the use of mild soap. Number third, assist the patient to set limits on ritualistic cleaning behavior, रेशन होगा help to reduce damage of the skin due to repeated cleaning. इम्प्लीमेंटेशन होगा पेशेंट असिस्टेड। नंबर 4 देखते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर नॉन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, रेशन होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर। इम्प्लीमेंटेशन होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट गिवन। नंबर 5 टीच द पेशेंट अबाउट मेजर्स सच एज यूज ऑफ प्रोटेक्टिव ग्लव्स, रेशन होगा प्रोटेक्ट द स्किन एंड टिश्यू फ्रॉम कंटिन्यूस हैंड वॉशिंग। इम्प्लीमेंटेशन होगा teaching given about measures. Number 6 teach about disease condition and ritualistic behavior, रेशन होगा by this patient know that this is OCD ritualistic behavior and control their activities. Implementation होगा teaching given to patient. After writing these interventions we rated the evaluation steps। तो यहाँ पर केयर प्लान नंबर 4 का evaluation होगा स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन्ड। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5। तो 5th केयर प्लान होगा यहाँ पर जिसका डायग्नोस होगा सोशल आइसोलेशन। देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट verbalize that I am having poor social relationship, objective data here, a lack of confidence in public, inability to make eye contact, lack of communication, obsession with one's own ideas, repetitious meaningless behavior। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा सोशल आइसोलेशन related to experience of difficulty in interaction with other, secondary to obsessive compulsive disorder। goal होगा to develop better relationship and to improve social and communication skills। इंटरवेंशन होगा फर्स्ट एक्सप्रेस ए वेलकमिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, रेशन होगा ए पॉजिटिव एटीट्यूड दैट इज accommodating, foster trust and enhance self worth। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर एक्सप्रेस ए वेलकमिंग एंड optimistic attitude। Number second, show the patient compassion that is steadfast, रेशन होगा to express the belief that the patient is a worthy person। इम्प्लीमेंटेशन होगा show the patient compassion that is steadfast। नंबर 3 देखते हैं ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट, रेशन होगा the patient feel emotionally stable when a trustworthy person is around, रेशन होगा इम्प्लीमेंटेशन होगा सपोर्ट प्रोवाइड। नंबर 4 make sincere and honor every commitment with the patient, रेशन होगा trustworthy and reliable connection to each other is important। इम्प्लीमेंटेशन होगा make sincere and honor every commitment with the patient। Number 5 note any out of the ordinary social conduct or absent social indicators, रेशन होगा a hurdle to effective socialization, the nurse can look for irregular communication। इम्प्लीमेंटेशन होगा noted any out of the ordinary social conduct or absent social indicators। Number 6 maintain an appropriate distance when engaging with the patient, रेशन होगा an individual having panic level anxiety could view contact as a potentially dangerous act। इम्प्लीमेंटेशन होगा पर maintained an appropriate distance when the engaging with the patient। After writing these interventions we write here the evaluation steps of this care plan। evaluation में लिखना है यहाँ पर now patients relationship developed and improved social and communication skills। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो ये थे हमारे
OCD के टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान्स जो अभी हमने यहाँ पर वीडियो में देखे थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।